Okay, so yesterday we learned that when we multiply a decimal by 10, 100 or 1000, we shift the decimal to the right hand side. Is it clear to all of you? To the right hand side. Now what we will learn today that what we do when we shift the decimal in division. Okay, कहाँ हम उसको shift करते हैं? I will be showing you again a video in which the decimal will be shifting from the right, not to the right hand side, because when we divide the number from decimal number with 10, 100 or 1000, we shift it on the left hand side. ठीक है, जब हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, जाता है, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इट गोज ऑन द राइट हैंड साइड. ओके, I am showing you a video again, okay, and I want you all to look at that video very carefully. I hope you will understand it. Okay, so 1, 2, 3, here it is. Okay, so I hope you all got to know that she is saying कि जब हम देखें, I told you the same thing, when we divide a decimal by 10, अगर हम divide कर रहे हैं decimal को by 10, ठीक है, तो we shift the decimal point one place to the left. हम उसको one place to the left लेकर जा रहे हैं. ठीक है, जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा, ये जो डेसिमल है ये इधर जाएगा. ठीक है, बट व्हेन वी डिवाइड इट ना, इट गोज at the left hand side and the answer becomes 3.216. Is it clear to you all? Is it clear to everyone? Give me a thumbs up through Zoom. Okay, so let's see. Okay, now what happens is, I told you before also that when there is no number, right, जब आपके पास कोई number नहीं है, okay, so what happens is कि okay, what happens is कि I told you, as I told you before, कि जब when there is no number, it means there is a zero. Okay, so what happened in this case, अब यहाँ पे जब left hand side पे जा रहा था वो 2 times गया, so obviously there was no zero, वो shift हुआ 1 and 2, यहाँ point आ गया, और point से पहले when there is no number it means it's a zero over here. ठीक है, तो what was the answer? 0.3216. okay, and same goes for divide by 1000. जब हमने divide by 1000 किया तो what happened is कि there are 3 zeros, हमने उसको left side पे 3 times shift किया, 1, 2 and 3. So what is the answer now? 0.032.3216. okay, is it clear to everyone? Is it clear? Did you all get to know? Did you all understood? Did you all understood? Any questions? Any questions? Any questions? Okay, let me take questions. Yes, Alicia. Unmute yourself, Alicia.
One by one, I'll be unmuting you. Don't worry. Yes, Alicia, unmute yourself. Alicia, unmute yourself. Ji, Alicia. Miss, please repeat. I don't. Miss, You're I still don't get confused? You're still division. confused? Okay, no problem, no problem. We'll be doing it. Yes, Don't worry. miss. Wait. I'll be giving you an explanation again. Okay, Ehsan Siddiqui, unmute yourself, Ehsan. मिस मैं ये कह रहा था कि बोलिए. मेरी तरफ से तो वॉल्यूम फुल 100 है. आपने जो वीडियो लगाई आपकी तरफ से शायद वॉल्यूम लोअर है, इसलिए मुझे वॉल्यूम नहीं आई उनकी. It was 100 from my side too. I don't know why. You didn't heard. मेरे पास से भी 100 है बेटे. Okay, so I hope everyone understood it. Is it clear to everyone? बेटे मैं अभी आपको बोर्ड पे भी समझाती हूँ. ओके, डोंट वरी. मैं आपको सिर्फ एक वीडियो दिखाई थी टू यू नो मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर. ओके, यस माहीन, यू हैव अ क्वेश्चन. जी बोलिए. रेज योर हैंड. टीचर आई से मुझे ना अब आप मेरे पास से वॉल्यूम मुझे आवाज ही नहीं आई. अब वीडियो की जो आप दिखा रही थी तो आप मुझे वापस पूरा वो समझा दें. अच्छा, मैं अभी आप लोगों को दोबारा से समझाती हूँ. डोंट वरी. Give me a second. Okay, teacher. Thank you. Okay, you're welcome. Okay, I am giving you a question. Write it down. मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ. लिखें उसको. Write it on your notebooks. Twenty-four point 24.15. Write down the question. 24.15. .15 divided by divided by 100. Divided by 100. Write the question. 24.15 divided by 100. 24.5 divided by 100. Okay, so as you all have written the question, let me also write it down. 24.15. Okay, give me a second. Do you all remember that what we learned? We learned कि क्या नाम है, when we do multiplication, the decimal moves to the right hand side. Remember, we did it yesterday that when we write any numbers, the decimal moves to the right hand side. Remember? Now what happens in the division case? Okay, let me write the question that I have given you people. 5 divided by 100. Okay, so how many zeros does 100 have? It's having 2 zeros, right? So decimal अब कहाँ move करेगा? It will move to the left hand side. Left hand side क्या होगा?
वो इस साइड पे मूव करेगा. दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड. इट मूव्स 2 टाइम, राइट, एंड द पॉइंट कम्स बिफोर 2. पॉइंट जो है वो 2 से पहले आ जाएगा और क्या हो जाएगा आंसर? 0.2415. I hope that you all understood. समझ आया बेटे? समझ में आया? देखें, मैं आपको इधर दिखाती हूँ, 1 मिनट. Okay, so here is my screen. अच्छा, I gave what question did I give you? I gave you, see, look at the screen. जल्दी से screen पे देखें. Just look at the screen. Can you all see my screen? Can you all see my screen? Give me a thumbs up through Zoom. Give me a thumbs up through Zoom. Thumbs up through Zoom if you all can see my screen. Okay. I hope you all wrote the question like this. Hassan, can you see my screen? Okay. Okay. So what happens is they said that 100 minus 24.5, oh sorry, divided by 24.5 divided by 100. अब हमने learn किया था, we learned कि when there is a multiplication sign, this decimal point moves on the right hand side. ठीक है? But when there is a division sign, then there is a divide sign, the decimal moves on the left hand side. ये क्या होगा? यहाँ move किया 1, 2, यहाँ आ गया 0, oh sorry, यहाँ आ गया point, and the 0 will come over here because there is no number, we consider it as a 0, right? तो हमारा अब आंसर क्या हो गया? Now our answer is, wait, I'll write it over here. Our answer is 0.2415. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Yes, Ahsan, unmute कीजिए बेटे. जी बोलिए. मिस, ये अगर डिवीजन का साइन आएगा तो वो राइट हैंड पे जाएगा. अगर डिवीजन होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे डेसिमल जाएगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो राइट हैंड साइड पे जाएगा. ओके. और मिस, मुझे आपसे एक और क्वेश्चन था. वो ये था, आप लोगों ने मैथ्स की वर्कशीट फुल कर ली या नहीं? बेटे अभी हम वर्कशीट में आएंगे, पहले आप इसको समझ लें, देन वी विल स्टार्ट डूइंग द वर्कशीट. मैंने तो पूरे मैथ्स की वर्कशीट. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. फिर हम आपसे ही सारी सॉल्व करा लें क्या? नहीं. ओके. अच्छा, आपसे हम एक दो क्वेश्चंस तो सॉल्व करवाएंगे भाई. ओके. Okay, let's give a chance to Abraham. He wants to say something. Yes, Abraham, unmute yourself. जी बेटा. टीचर, मैंने तो सारी पूरी वर्कशीट कर ली. पूरा वर्कशीट पैक मैंने कर ली. वेरी गुड. बट अभी हमें इसको अंडरस्टैंड करना भी तो जरूरी है ना, बिकॉज दीज थिंग्स विल बी कमिंग इन योर फाइनल एग्जामिनेशन, सो इट्स इम्पोर्टेंट टू लर्न. अच्छा, now I hope everyone understood this. Thumbs up through Zoom. Thumbs up through Zoom. Thumbs up through Zoom. अच्छा, अब आपने ये तो सीख लिया कि when we divide, ठीक है, when we divide the decimal moves to the left hand side, and when we multiply the decimal moves to the right hand side. Is it clear? Is it clear to all of you? किसी को भी confusion है मुझे बताएं. We'll do it again. We'll do it again. Alisha, you had confusion, right? Is it clear? Alisha, okay, okay. And who else? Yes, if you have any questions, you can raise your hand through Zoom. Okay, Maheen is raising her hand, and Fariha. Yes, Maheen, unmute yourself. Teacher, I don't have a confusion, but टीचर, मुझे समझ में आ गया. समझ आ गया. एक्सीलेंट, वेरी गुड. सॉल्व कर लिया. लोग टीचर, मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया.
शो मी। बेटे मुझे इतनी दूर से नजर नहीं आ रहा। ओके, गुड गुड गुड। ओके, यस फरीहा बेटे, अनम्यूट योर सेल्फ। जी बोले, फरिया अनम्यूट कीजिए बेटे। फरिया बेटे बोलिए। मिस जी मिस जी। मिस मैं कह रही थी कि ना मैंने अपनी मैथ्स की वर्कशीट पूरी कर ली। ओके बेटा, ओके, वेरी गुड, बट स्टिल बेटे ये हु चेंज द नेम टू हेलो? बेटे डोंट चेंज योर नेम, I'll otherwise I'll remove you from the class. Join the class with your own name. Okay, अब फरिया वेरी गुड, थैंक यू। यस अब रेहान बोलिए बेटे। दोबारा समझा दें? दोबारा समझा दूं? देखें, मैंने आपको बताया कि जब हम डिवाइड करते हैं ना, डू यू वांट टू सी द वीडियो अगेन? डू यू वांट टू सी द वीडियो अगेन रेहान? रेहान आपको वीडियो दोबारा देखनी है? Okay, this is the last time that I'll be answering the questions and then we'll be solving the worksheet. Okay, so oops. Multiplication. Okay, Rehan. Okay, everyone, here is the screen and watch the video. Listen to it carefully. Okay, Rehan, unmute yourself and let me know, did you understood? Yes. जी रेहान, समझ में आया बेटे? देखें, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, जब हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया लेट्स सपोज, ठीक है, तो हम उसको डेसिमल को सिर्फ वन टाइम शिफ्ट करेंगे, एक साइड शिफ्ट करेंगे, एंड इफ देयर आर टू जीरोस वी विल बी शिफ्टिंग इट टू टाइम्स ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है, एंड सेम गोज नाउ डिफरेंटली, ठीक है, डिफरेंटली होगा डिविजन में। आई विल शो यू द डिविजन वीडियो अगेन, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आई विल बी शोइंग यू द डिविजन वन अगेन. Listen to it very carefully. Okay, so sorry. Here is it. Okay. Rehan, listen to it very carefully. Okay, did you understood, Rehan? Same goes the decimal in the division case, it moves to the left hand side. If there is 1 0, it will move one time. If there are two zeros, it will move on the left hand side two times. Okay, is it clear to you? Is it clear to you, Rehan? ठीक है, I will be sharing a picture in which you will understand it more. ठीक है, see, here is the picture. Can you all see that picture?
दिस इज व्हाट हैपनिंग. देखिए जब मल्टीप्लाई होता है ना तो इट गोज ऑन द राइट हैंड साइड. ये राइट हैंड साइड पे मूव कर रहा है डेसिमल. देयर इज ओनली 5 पॉइंट, ठीक है, जीरो ओवर हियर 5.0. जब मैंने उसको मल्टीप्लाई किया 10 से तो वो वन टाइम मूव हुआ और डेसिमल यहाँ चला गया. ओके, and it became 50. The answer is 50. Okay, now same goes for 100. 5.0, there were two zeros. Okay, because it was moving two times. There are two zeros in 100 and the decimal moved two times. 1 2. Okay, and what is the answer? 500. Now Rehan, solve this question. 5 point multiplied by 1000 is equals to. Rehan, solve this question. 5 point multiplied by 1000. Hurry up, you have to do the worksheet. Solve this question, everyone. 5 point multiply by 1000 and show, tell me what will be the answer. 5 point multiply by 1000. What is going to be the answer? जो raise hand करेगा, I'll unmute that child only. Okay, Abraham has done. Yes, Abraham, unmute yourself. टीचर आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा था? मैंने क्वेश्चन आपको दिया है 5 point multiply by 1000. What is the answer? What will be the answer? Do it on your rough copy. Solve it. Hurry up. 5 point multiply by 1000. Yes, Shabi Fatma, unmute yourself. जी बेटे, अनम्यूट करो बेटे. मिस इसका आंसर 5000 है. Excellent, very good, Shabi Fatma, very good. I hope you all understood. Rehan, did you understood? 5 point 1000 multiply by 1000. Okay, excellent. Now everyone open your numeracy worksheet pack and open this page. 1 minute, I am showing it to you. Wait. Open this page. Can you all see the page? Open it. Open this page. Open this page. Okay. Did you all open this worksheet? Okay. So what happens is they are saying add the following and give your answer in kilograms. ठीक है, क्या करना है? They are saying कि आपको पहले add करना है and then you have to give the answer in kilograms. अब I taught you before, when we convert from gram, when we go from grams to kilograms, which sign do we use? When we go from small to big, I told you, which sign do we use? Who's going to answer this question? Raise your hand through Zoom. Who will answer this question? Then when we go from grams to kilograms, which sign do we use? Yes, Mahin, unmute yourself. Oops. Zainab, unmute yourself. Right. Excellent, very good. Okay, when we go
from small to big, we divide. Okay, when we come from small, big to small, which sign do we use? Yes, Ehsan. कौन सा sign use करते हैं जब हम big से small आते हैं? Multiply. Very good. Thank you. Okay, now. Yes, Alicia, you have a question? जी, Alicia. मिस मैंने सारा कर लिया है पहले से। बेटे बट सब कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं किया है ना, तो सबको समझना जरूरी है, तो इफ वी हैव टू डू इट. ओके, थैंक यू टीचर। okay, so what happens is, now first of all, the first step that we will do is, first of all we will add. मैं आपको शो कर रही हूँ. The question is, okay, let me, can you see my screen? Can you see my screen now? Okay, so can you all see my screen? Okay, so it says 5,000. Okay, 5,000 plus 2,000. What will be the answer? What will be the answer? Okay, Alicia, what will be the answer when you will add 5,000 plus 2,000? Ji, Alicia. 7. Okay, excellent. 7,000, excellent. Okay, so the answer will become 7,000. Now what happens is, okay, sorry. The Miss? answer is, yes. Miss, when will it convert to kilogram? Yes. The answer is 7. Excellent, very good. What happens is, when you will divide 7,000 divided by, what you will do is, when we go from grams to kilograms, we divide, right? Yes, miss. Okay, so we divided it, and जब हमने उसको divide कर लिया, तो it became 5,000 divided by 1,000. It became 7 kilograms. What is the answer of the first question? It is 7 kilograms. Okay, now solve question Miss? number. Yes, yes. Miss, can I give answer of all question? No. I have to give a chance to everyone. Okay, yes, Abraham, unmute yourself. जी अब्राहम बोलो बेटे. टीचर आपने सेकंड वाला क्वेश्चन पूछा है ना? First, 5,000 grams plus 2,000 grams. It became 7,000 grams. To 7,007 grams. Yes, when we divided it with 1,000, it became 7,000 grams. Okay, now question 2. Yes, okay, there are some questions. Yes, Ahsan Siddiqui, unmute yourself. Ahsan, जल्दी से unmute करो बेटे. Unmute yourself. जी. मैं ये कह रहा था कि जो 1 kg है उसके होते हैं 1000 ग्राम्स, वैसे 2 kg है उसके हैं 2000 ग्राम्स, वैसे सबसे पहला वाला क्वेश्चन है उसके अंदर है 5,000 ग्राम्स प्लस 2000 ग्राम्स. ये वाली वर्कशीट भी मैंने करी और ये भी मैंने समझा है, तो आंसर है इसका 7 kg. 7 kg, excellent. Okay, yes, Mahin, unmute yourself. Yes, teacher. You only raised your hand, beta. टीचर वो मुझे पहले वाले का देना था, फिर किसी और ने दे दिया. Okay, no problem. Okay, so question number 2 says 2,300 grams plus 1,100 grams.
2300 grams plus 1100 grams. Sit and take your class. Ayan Ashraf, are you solving it? Hassan, are you all solving it? Are you all solving these questions? Are you all solving it? ठीक है? Are you all solving it? Yes, some questions. Yes, Abraham, you raised your hand. I have any question? No, miss, I know the answer of second one. What is the answer? Teacher, 3.400 and 3.400 kilograms. बेटा 3.4 होगा सिर्फ, 0 तो खत्म हो गए ना, 3.4 kgs होगा. टीचर ये देखिए मेरे पास तो ये है. बेटा देखिए मैं आपको समझाती हूँ. You all are getting confused. Let me take some more questions. Then we'll be doing. I'll be making you understand again. जी अब्दुल्ला, yes अब्दुल्ला, जी बोलिए बेटा. जी बोलिए अब्दुल्ला जल्दी से बेटा. अनम्यूट तो करो. मिस मुझे सेकंड वाला क्वेश्चन बताना था लेकिन वो अब्राहम ने बता दिया. आप बताएं क्या आंसर है. 3.4 kg. Very good, excellent. 3.4 kg. Okay, yes, Ayan Ashraf ji, answer. What is the question, beta? I can't hear you, Ayan Ashraf. मिस कौन सा लिखना है? बेटे आपकी वर्कशीट पैक का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रही हूँ मैं. ओके. Yes, Hassan ul Haq, you had a question. बोलिए बेटे. नो मिस. Okay, समझ आ रहा है? जी. अच्छा अब्राहम, now look over here. हमारे पास क्वेश्चन क्या था? What was the question? The question was, where is my pen gone? Okay, here it is. So when we added up 2300 and 1100, it became 3400. Okay, and we have to change these grams into kilograms. So what we do is we divide it with 1000. ठीक है अब्राहम जरा यहाँ गौर से देखे बेटा. Can you all see my screen? Can you all see my screen? Can you all see? Now what happened is कि जब divide का sign आता है तो what we do is we take the decimal to the left hand side, right? This is what I taught you, yes? So there are three zeros over here, right? तो हमने क्या किया, यहाँ से जो मैंने आपको बताया था, मैंने याद है आपको बताया था कि हर नंबर के साथ एक डेसिमल होता है. That is an invisible math. हर नंबर के साथ एक डेसिमल अवेलेबल होता है, बट हम उसको वहीं शो करते हैं जहां उसकी नीड होती है. ठीक है, तो हमने यहाँ से लिया डेसिमल. ठीक है, हमने यहाँ शो किया डेसिमल और उसको 3 टाइम्स मूव किया. 1 2 3. And what will be the answer? It will be 3.4. I hope it's clear. अब ये 2 zeros तो कोई हमारे यूज के नहीं है ना. ठीक है, क्योंकि हमने तो डेसिमल को इनके पास से मूव कर दिया और अब 3.4 हो गया. यहाँ पे तो जीरोस फिनिश हो गए, जीरो रहे वो नहीं रहे, क्योंकि हमें आंसर जो चाहिए था वो चाहिए था किसमें, किलोग्राम्स में, राइट. तो हमें जो है वो हमने उसको डेसिमल को डिवाइड करके मूव करा. ठीक है, एंड द आंसर बिकेम 3.4. इज इट क्लियर Abraham, is it clear? Is it clear to everyone? Okay, so the meeting is about to end. Okay, and you can rejoin the class because only 10 minutes are left. I want to teach you one more thing and then I'll be giving you a homework. So I'm ending the class, okay? Rejoin the class.